Assalamu alaikum. My name is Malik Musiraj, and today I'm going to record my first video lecture of data communication and networks after the coronavirus issues. The methodology that I'm going to adopt is I'm going to record my video and then upload that video on a YouTube channel and share a link with you guys. After that, after a day, we will be having a discussion on that video that I have already uploaded with you guys. For that discussion, I'm going to send you an invite on your email address, and I will share the time on the WhatsApp group that we already are using. So before that, we already covered article 2.1 of chapter number 2, and the chapter number 2 primarily deals with the application layer. We talked about the different bases of application layer architectures and the requirements, and today's class I'm going to tell you about the article 2.2, which is web and HTTP. Web and HTTP, we are already familiar with the web and HTTP, and we are already using web and HTTP in our daily life. We already browse on different websites. We go on social networks and browse on different websites, and those websites are using an HTTP protocol. Those web pages generally consist of different objects, and objects, I can say that whenever you go to the, let's say I go to ks.edu.pk web page, that ks.edu.pk web page contains logos, animations, data that are categorized, textual data that are categorized in different sections and headers. These are all different objects that I may have. Maybe sections or headers may not belong to the object, and sometimes it belongs to the object. It may or it may not. But mostly your animation, images and videos actually belongs to the object. Object can be HTML file, JPEG images, Java applets, audio and video. Web page consists of base HTML file, which includes several reference objects. We will look into this thing even in Wireshark. It says that whenever we go and open a page like ks.edu.pk, it might possible that ks contains its logo in some other URL, some reference reference URL, maybe video, maybe some animation on some other URL. So once I'm sending a request to case.edu.pk web server, the web server actually responds back to me, and in that response it contains multiple different reference objects, and my system then send a request to each URL that is coming in response, so that each object, different objects can be fetched from that URL. In this case, let's assume that this is the URL. In this URL is divided into two parts. One is called the host name, which we call as an FQDN, fully qualified domain name, and this is the path name of the object. The object can be your JPEG, HTML, audio, Java, and any other things. We can see this thing too. So HTTP, let's talk about a little bit detail of HTTP, and later on we will go in more detail on how HTTP works. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It's a web application layer protocol, a protocol that is used by the web applications. This HTTP protocol actually uses a client-server architecture. We already talked about there are two types of architectures, and those are client-server architecture and peer-to-peer architecture. Yes, the HTTP application layer protocol uses client-server architecture. The client-server architecture is there's a client browser that there is a client and there is a server. A client sends a request to a server and a server responds back to the client. In this example, it shows that you have two PCs, two clients. One is a Firefox browser running on a PC, other is a Safari browser running on a iPhone server.
So in this scenario, your client Firefox browser running on PC sends an HTTP request to the web server. In this case, it is shown that the web server is using an Apache web server, Apache based. It's one of the open source softwares where you can build a web server. There are many other softwares where you can build your web servers. Well known are Nginx, Node, and many other. So it sends a request to the web server, and web server responds back with the HTTP response. We will look into the message detail of HTTP request and HTTP response and find out what are the different format, what is the header of HTTP message, and what are the different fields of that message. Same is true. The iPhone Safari browser running on iPhone, it sends a request and it gets a response back from the HTTP web server. On the transport layer, HTTP is using a TCP protocol. We already talked about that. On the transport layer, there are two types of protocols that are well known. One is called TCP, which stands for Transmission Control Protocol. Other is called a UDP, which is a User Datagram Protocol. HTTP uses TCP. TCP we already talked about. In TCP there is a connection establishment phase. Connection needs to establish, whereas in case of UDP there is no connection establishment phase. So in case of a TCP, our client send a request to a server, and our server then receives a request, send a response to the client, and the client then again send a response back to the server. So we call that thing as a three-way handshake. We will talk about the detail of TCP handshake once we are talking about transport layer. So but we already talked about this thing too, that during the client request, initial client request to the web server, that is a message that initiates a request. There is a flag in TCP header that is called a SYN flag. That SYN flag is one in case once this SYN flag is one, it shows that this is a client request message for establishing a TCP connection. Server then once look into that message, sends a reply back in which the SYN flag is one, and there is another flag which is an acknowledgement ACK flag, and it asserts the acknowledgement flag and a SYN flag. The client receives that message and send back a response to the server in which the ACK flag is 1. So the client initiates a TCP connection. Clients initiate a TCP connection to the server on port 80. Web server always listen. HTTP web server always listen on port 80. Okay. By default, port 80 is used for HTTP web server. Whenever you open HTTP website, so port 80 is there. You connect the server on port 80. Server accept the TCP connection from the client. Server is waiting for a client to establish a TCP connection. HTTP message exchanged between the browser, HTTP client, and HTTP server. The different messages are exchanged between the client and the server. Once those messages are exchanged and data is transferred, TCP connection is closed. ठीक है, TCP का जो connection है वो आपके पास close हो जाएगा. HTTP is a stateless protocol. This is a very important thing that you guys need to understand at this point. It says that server maintains no information about the past client request. What it means that it means we already talked about this thing, that in HTTP there is a client and there is a server. So server do not have any information. Server do not store any information of a client. That which client send a request to a server. Server do not maintain. Server do not store any history of the client. Okay, so we call HTTP as a stateless because it is not storing any information of its client. The protocol that maintain a states are quite complex protocols. Maintain states are complex protocol. Past history state must be maintained. Okay, once a protocol, once a thing which is you already studied
digital logic design course, you talked about the state machine. State machine, what you are doing, what state machine is doing, it is storing some information कि वो अभी किस स्टेट मशीन इज स्टैंडिंग एट विच स्टेट, और वो क्या क्या कहाँ से किस जगह से वो ट्रैवल करके इस स्टेट के ऊपर पहुँची है, ठीक है, वो कहाँ से ट्रैवल करके आई है और अभी वो क्या क्या बातें याद रख चुकी है. सो दैट इज़ अ स्टेट, एंड अ स्टेट रिमेंबर्स समथिंग. HTTP is a stateless protocol. The server do not remember anything. Okay. If the server and the client crashes, their view of the state may inconsistent, must be reconciled. But in your experience, in my experience, we faced a different experience. And what is that? One is experiences in my browser. Once I close my browser and open again gmail.com, what happened is my email or my password is already saved. So once I type gmail.com, once I go and type gmail.com, just like this thing, I'm going and type gmail.com, I automatically get logged in on my gmail.com. I do not provide password. ठीक है, मैंने I didn't provide password और मैं इसमें login कर चुका हूँ. ठीक है. Similarly, आप लोग इसके अलावा once you go to any e-commerce website, so you do not provide you do not write anything automatically according to the according to your past history. You get the new क्या कह सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर पास्ट हिस्ट्री. आपने पास्ट में क्या सर्च किया. एग्जांपल, वंस आई बाय एनी SPC single board computer, next time I go to the aliexpress.com, I mostly see an ads that are related to a single board computer. Even I buy something from AliExpress that is on single board computer, I go to the Facebook and I see the ads that is based on the single board computer. So on one side, what we are saying is, we are saying that backend is used, backend is the backend of the server that I'm using is HTTP. ठीक है, AliExpress है, Alibaba है, Facebook है, these all server are the HTTP, and we are saying HTTP is a stateless protocol. But along with that, I show you my experience. Once I go to the Gmail, it opens. I do not need to type my password or email address. It automatically log into my system. Similarly, whatever I searched previously, I get some new products, ideas that are related to my previous searches. Okay. So ultimately, HTTP is not doing anything in this regard. It is the cookies that those web servers are storing on your system, on the client system, and based upon that cookie's value, it store and that cookie actually store all those information. ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपने क्या सर्च किया था, आपने कहाँ पे गए थे, क्या पासवर्ड लेते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे पड़ी होती है. इवन पासवर्ड्स आपके कुकीज़ में नहीं आते, वो ब्राउज़र इटसेल्फ स्टोर कर रहा होता है. HTTP is a connection, HTTP connection. अब HTTP के अंदर there are two types of connection that HTTP can make. One is called a non-persistent HTTP connection. Other is called a persistent HTTP connection. ठीक है, let's talk about those. Non-persistent HTTP, at most one object sent over TCP connection. ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि यार मेरे पास होता क्या है कि once I establishes a connection with a web server, ठीक है, I send a request. That request contains some reference object, referred object. ठीक है, कि उसमें multiple different object के URLs आएंगे जो मुझे get करना है. In case of non-persistent HTTP connection, it says at most one object is sent over a TCP connection. That means I send a request to case.edu.pk web server. ठीक है, let's say they send me a reply and that reply contains 10 reference object. ठीक है, it says that non-persistent says that only one object can be get on one TCP connection. For next object to fetch, I need to establish another TCP connection with this server to fetch next object. For second object to fetch from case.edu.pk web server, I need to establish a second TCP connection. TCP connection means कि client की side से के ऊपर sync जाएगा, sync message is sent to the server, server responds with the sync plus ACK, and then client send an ACK message to the server. ठीक है, तो ये complete it's a connection through a handshake actually results into a connection. So in case of non-persistent HTTP connection, for each object to fetch,
a new TCP connection has to be made. ठीक है, at most one object is sent over one TCP connection is closed. Downloading multiple objects required multiple connections to be made. In case of a persistent HTTP, multiple objects can be sent over the single TCP connection between client and server. So what is the advantage of persistent and non-persistent? Let's see. Please explore. So here is the example of non-persistent HTTP. Suppose that user open a URL. ठीक है, this is a URL that user wants to open. उसने ये open किया. First of all, HTTP client initiate a TCP connection. सबसे पहले TCP connection बनेगा, ठीक है, with this web server. और port क्या होनी चाहिए? Port 80 होगी. Because we already talked about कि web server की जो port होगी, that port is port 80. HTTP server at host this waiting for TCP connection on port 80, accept the connection and notify the client. ठीक है, उसने connection accept कर लिया और client को notify कर दिया. HTTP client send an HTTP request message containing the URL into the TCP connection. Message indicates that the client want an object on ये जो object है ये client ने get करना है. ठीक है, सबसे पहले उसने TCP का कनेक्शन बनाया और पोर्ट 80 के साथ. इसकी अपनी सोर्स पोर्ट होगी, इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट पोर्ट 80 होगी. ये एस्टेब्लिश करने के बाद, बाय द वे, कैन यू टेल मी एट दिस पॉइंट हाउ द वेब सर्वर, हाउ दिस क्लाइंट एक्चुअली गेट्स द IP एड्रेस ऑफ दिस वेब सर्वर, बिकॉज दिस IP एड्रेस इज रिक्वायर्ड. सो फूड फॉर थॉट, थिंक अबाउट इट. द HTTP client sends HTTP request containing the TCP. Sorry, this is already talked about. HTTP server receives a request message from response message containing the requested object and send a message to its socket. ठीक है, उसने message लिया, receive किया और उसका उसने response message बनाया और response message उसको भेज दिया. HTTP server closes a connection because it's a non-persistent connection. It closes a connection. HTTP client receives the response message containing the HTTP file, displays the object. Parsing the HTML file, it finds out it contains the reference object. But the server actually closes the connection because it's a non-persistent HTTP connection. So client again follow the step 1 to 5, again establish a TCP connection with the server, and then on that TCP connection get a reference object, and it will do this thing for all the 10 JPEG images. So next talk about more detail about the non-persistent HTTP and persistent HTTP in terms of their responses. Before going in that, let's define a terminology called round trip time. I have already defined the terminology too, but let me again define the terminology. Round trip time is defined as round trip time is a time for a small packet to travel from client to server and back. ठीक है, तो this is my client, this is my server. A round trip time is a client send a message to a server, a small packet is sent to a server then send a response back to the client. This time is called a round trip time. कितना टाइम लग गया उसको मैसेज जब भेजा उसने तो सर्वर तक पहुंचा और सर्वर से उसका रिस्पांस आया, तो उसमें कितना टाइम, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू सेंड अ मैसेज टू रिसीव अ रिस्पांस ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड अ राउंड ट्रिप टाइम. ठीक है, सो HTTP रिस्पांस टाइम, अगर HTTP if we talked about HTTP रिस्पांस टाइम के कितना टाइम लगेगा HTTP रिस्पांस को, तो वी नो कि मेरे पास सबसे पहले क्या होगा कि मेरे पास TCP की कनेक्शन जाएगा, TCP का एक पैकेट क्रिएट होगा एंड दैट पैकेट इज सेंट टू अ सर्वर इन विच द SYN फ्लैग इज सेट टू 1. ठीक है, एंड देन सर्वर देन सेंड अ रिस्पांस बैक टू द क्लाइंट and in that response SYN plus ACK flag is asserted, and then client send a ACK packet to the server. Client send an ACK packet to the server, or it can be a part of this message. ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स टाइम होगा ये मेरे पास एक RTT लगा है TCP का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, सेकेंड RTT HTTP की रिक्वेस्ट गई है to the server and server send a response back to the client. और ये कुछ टाइम लगा है जो उसको सर्वर को डेटा ट्रांसमिट करने में लगा टाइम. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम
जो कि नॉन परसिस्टेंट HTTP के केस में आया है जब आपने कोई एक चीज़ डाउनलोड की है। तो जो अगर हम लोग देखें तो मेरे पास रिस्पॉन्स टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम इज़ RTT प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। सो HTTP रिस्पॉन्स टाइम इज़ 1 RTT टू इनिशिएट अ TCP कनेक्शन, ठीक है, 1 RTT to initiate a TCP connection, 1 RTT for HTTP request and few bytes of HTTP response in return, ठीक है। सेकेंड RTT प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, फाइल ट्रांसमिशन टाइम आ गया। नॉन परसिस्टेंट HTTP रिस्पॉन्स टाइम इज 2 times of फाइल ट्रांसमिशन टाइम्स, 2 times of RTT प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। दिस इज द टाइम that is therefore in case of a non persistent HTTP रिस्पॉन्स टाइम ये इतना होगा कि आपने एक रिक्वेस्ट की सर्वर को और सर्वर कितनी देर में आपको रिप्लाई करेगा और रिप्लाई के बाद आपके पास कितनी देर में डेटा आ जाएगा। दिस इज़ द कंप्लीट रिस्पॉन्स टाइम 2 RTT प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम। परसिस्टेंट HTTP, ठीक है। अब नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट में हम लोगों ने एक फ़र्क डिफाइन किया था, पर नॉन परसिस्टेंट में हम लोगों ने क्या कहा था, नॉन परसिस्टेंट में हम लोगों ने कहा था यार नॉन परसिस्टेंट at most one object is object sent over a TCP connection, एक ऑब्जेक्ट जाएगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ परसिस्टेंट HTTP जाएंगे। सो अगर यहाँ पे आए तो मेरे पास अगर इसको देखें तो रिक्वायर्स 2 RTT पर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो हर ऑब्जेक्ट के लिए 2 RTT होगा। OS overhead for each TCP connection, browser often open a parallel TCP connection to fetch the reference object, ठीक है। ये कह रहा है कि टोटल अगर मेरे पास लेट्स से इफ आई वांट टू फेच 2 ऑब्जेक्ट्स एंड फ्रॉम दी सर्वर, ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल जो टाइम लगेगा 2 RTT पर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, 2 times ऑफ द RTT, एक RTT लगा प्लस HTTP का एक टाइम लगा, ये एक ऑब्जेक्ट के लिए लगा और उसका फाइल का जो साइज़ था वो आने में, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को फेच करना है तो देन अगेन एस्टैब्लिश अ TCP कनेक्शन एंड देन सेंड एन HTTP गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ परसिस्टेंट, लेकिन ब्राउजर ये भी काम करते हैं इन ऑर्डर टू स्पीड अप दिस थिंग, तो वो पैरेलल में वो TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर मोर रिसोर्सेज बट दे कैन एस्टैब्लिश अ पैरेलल TCP कनेक्शन विद दिस सर्वर। Persistent HTTP, server leaves the connection opens after sending a response message, ठीक है। आपका कनेक्शन था, कनेक्शन आपने कीप अलाइव एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक आप कह सकते हैं एक मैसेजेस के अंदर एक क्या कह सकते हैं इसको, एक वैल्यू है जो कि कीप अलाइव के, अगर कीप अलाइव आपको ये बता रहा होता है कि कनेक्शन आपके पास परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट है। वी विल लुक इनटू दैट थिंग व्हाइल डिस्कसिंग द होल आइडिया इन Wireshark. Subsequent HTTP message between the same client and server sent over the open connection, ठीक है। आपने एक रिक्वेस्ट की, आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, रेफरेंस ऑब्जेक्ट आए हैं, तो वो उसी कनेक्शन में जो कनेक्शन होगा वो सर्वर्स क्लोज नहीं करेगी। यू डोंट नीड टू री एस्टैब्लिश थ्रू हैंडशेक यू नॉट फॉर न्यू ऑब्जेक्ट। आप उसी कनेक्शन जो एस्टैब्लिश किया होता है आप दोबारा उसके ऊपर गेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपके पास वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट एज सुन एज इट इनकाउंटर्स द रेफरेंस ऑब्जेक्ट एज लिटल एज 1 RTT फॉर ऑल द रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको एक RTT लगा है तमाम रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द HTTP हेडर, ठीक है। HTTP देयर आर 2 types ऑफ मैसेज इन HTTP, ठीक है, एंड दोज मैसेज आर HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। जो भी मैसेज आएंगे या तो वो रिक्वेस्ट मैसेज होंगे या वो रिस्पॉन्स की तरह के मैसेज होंगे। HTTP रिक्वेस्ट मैसेजेस, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज in which this is the HTTP get message whenever you open a browser and you type any URL just like google.com or ks.pk or any other domain name, your browser send an HTTP message and that HTTP message is HTTP get message, ठीक है। आपकी तरफ से ये get message जाएगा और बता रहा है कि आपने get क्या करना है, index.html को ये आगे से चीज़ें बता रहे हैं कि बेसिकली आपके पास ना वर्जन नंबर्स और बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं अगर देख सकता दिस एक्चुअली टेल्स कि मेरे पास HTTP का वर्जन कौन सा चल रहा है, HTTP का वर्जन कौन सा चल रहा है, आपने किस वेबसाइट को रिक्वेस्ट की है, दिस इज़ द नेम ऑफ द वेबसाइट। सो इसके आगे अगर आप देखो कि इसके आगे आपने ओपन किया है जो पेज है, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट पेज विच इज़ index.html,
ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ द पेज दैट योर ब्राउज़र इज़ ओपनिंग। इन दिस दीज आर द ऑप्शनल फील्ड, ये बेसिकली हेडर है और ये बता रहा है कि मेरे पास जो यूज़र है जो कि ब्राउज़र यूज़ कर रहा है वो ब्राउज़र कौन सा है, फायरफॉक्स है, और फायरफॉक्स का ब्राउज़र का वर्जन नंबर 3.6.12 है। ये यूज़र जो है क्लाइंट है जो कि एक्सेप्ट करेगा टेक्स्ट या HTML एप्लीकेशन से, लैंग्वेज इसने बता दी है, इनकोडिंग बता दी है, करैक्टर सेट बता दिए हैं, और इसने बता दिया कि ये कीप अलाइव, ठीक है, कनेक्शन आपके पास कीप अलाइव है। कनेक्शन कीप अलाइव है तो इट्स आप सर्वर एक ऑब्जेक्ट भेजने के बाद सर्वर विल नॉट क्लोज अ कनेक्शन इफ सर्वर एग्रीज ऑन दिस थिंग कि सर्वर विल नॉट क्लोज अ कनेक्शन, सर्वर विल रिस्पॉन्स कीप अलाइव, वो रिस्पॉन्स करेगा और वो सर्वर कभी भी उसके बाद मैं ब्रेक नहीं, अपना जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लाइंट जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स गेट कर लेगा और फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। हर एक के एंड में आपके पास कैरेज रिटर्न होगा और लाइन फीड होगा, ठीक है, हर एक के एंड में आपके पास होगा। रिक्वेस्ट लाइन आपके यहाँ तो गेट की रिक्वेस्ट हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, हेड कमांड्स हो सकती हैं, वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। दिस इज़ द हेडर लाइंस और ये आखिर में आपके पास कैरेज रिटर्न आ गया। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज दैट जनरली वी सी। इन जेनेरिक फॉर्मेट मेथड आपके पास आ जाएगा, URL आ जाएगी, वर्जन नंबर आ जाएगा, दीज आर द ऑप्शनल हेडर फील्ड्स, इनमें कैरेज रिटर्न एंड अ बॉडी, ठीक है। दिस इज़ द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज, HTTP मैसेज, ठीक है। मेथड में आपको बता रहा है कि गेट है, पोस्ट है, हेड है, पुट है, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है।